Hello and welcome. In this video, we will be discussing that the last 30 days strategy for IPMAT Indore. सबको पता है कि एग्ज़ाम एकदम सर पे आ गया है एंड इस मोमेंट में सब लोगों को लगता है कि हम ये पढ़ लें, वो कवर कर लें, ये पार्ट रह गया है, सब कुछ हैज़ार्ड हो जाता है, रैंडम हो जाता है. तो उस रैंडमनेस और अनप्लैन्ड एक्शन को अवॉइड करने के लिए ही आज हम ये 30 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कर रहे हैं कि आप नया कोई रिसोर्स ऑप्ट कर रहे हैं या रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों की, तो वहीं रुक जाइए. प्लीज़ स्टॉप. योर टाइम इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल राइट नाउ एंड यू कैन नॉट वेस्ट इट ऑन रैंडम स्टफ. VRC कोई रटने वाला चीज़ है ही नहीं. पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन आपकी प्लान्ड होनी चाहिए, प्लान्ड मैनर में आगे प्रोसीड होनी चाहिए. यू विल बी गिवन 45 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव 40 मिनट्स टू सॉल्व दोज 45 क्वेश्चंस. यहाँ पे स्पीड के साथ साथ अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा. VRC इज़ नॉट अबाउट फैंसी वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड अलोन. Ultimately, it is your time management, your confidence and your accuracy. कुछ हाई वेट टॉपिक्स हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं फॉर द VRC एग्ज़ाम सो दैट हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकें. फाइनल 30 डेज़ में उसी हिसाब से फोकस ले सकें. हाई वेट टॉपिक्स क्या होंगे हमारा? ऑब्वियसली हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ऑब्वियसली हमारा वोकैब होगा एंड पैराजम्बल्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गेट स्टक इन पैराजम्बल्स. तो ये वो वक्त है जब हम पैराजम्बल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में मैंने इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है. सिंस रफली अगर मान लें तो आज से आपके पास 30 डेज़ हैं, राइट. सो फर्स्ट 10 डेज़ में हम अपने बेसिक्स कंसोलिडेट करने वाले हैं. जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमें रिवाइज करना है या जो भी अभी तक फील होता है हमें दैट दीज आर माई वीक पॉइंट्स, वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट दोज वीक पॉइंट्स इन योर फर्स्ट फेज, दैट इज़ फिक्स बेसिक्स. सेकेंड फेज में हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज एज यू नो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. प्रैक्टिस इज योर ओनली सेवर राइट नाउ. तो सेकेंड फेज में जो कि 10 डेज़ का फेज है उसमें हम इंटेंसिव प्रैक्टिस करने वाले हैं. एंड थर्ड एंड फाइनल फेज जो लास्ट के 10 डेज़ है उसमें हमें फोकस्ड एकदम मॉक मोड में जाना है. एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द D-Day. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू बी फंक्शनिंग इन दैट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एंड नॉट पैनिक, राइट. सो ये सारा का सारा कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड एवरी एस्पेक्ट इज गिवन इक्वल फोकस. सबसे पहले तो फर्स्ट फेज की बात करते हैं. जो इजी मार्क्स हैं, डू नॉट लूज आउट ऑन दैम. जस्ट बिकॉज आपने लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं किया ठीक से या आपकी प्रिपरेशन में कोई गैप रह गए, डज नॉट मीन कि आप लो हैंगिंग फ्रूट को छोड़ दें वहाँ पे एंड यू लूज आउट ऑन योर मार्क्स, राइट. तो इसीलिए इस फेज़ में हम सबसे पहले अपने बेसिक्स फिक्स करेंगे. हम 2 RC रोज करने वाले हैं, 20 वोकैब क्वेश्चंस एंड 10 ग्रामर एंड पैराजम्बल क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्वियसली वन साइज डज नॉट फिट ऑल, सो बहुत सारे लोगों के लिए ये प्लान विल नॉट वर्क. सो यू कैन ट्वीक दिस प्लान. इस प्लान का बेस्ट पार्ट यही है कि आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो. मेन पर्पस इज़ दैट रोज़ हमको बेयर मिनिमम सेट करना है अपने लिए कि ये तो मुझे आज सॉर्ट करना ही है, ये मेरे टारगेट्स हैं आज के, जो कि हैं 2 RCs. उसके बाद वोकैब, ग्रामर एंड पैराजम्बल. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर वीक इन पैराजम्बल और VA सेक्शन, तो वो रोज़ 15 to 20 क्वेश्चंस VA के कर सकते हैं. एंड वोकैब में क्योंकि आपको रिवाइज ही करना है, याद ही करना है, सो यू कैन सॉल्व 15 वोकैब क्वेश्चंस. सो दिस वे यू कैन ट्वीक योर प्रिपरेशन. बट रिमेंबर, इन दिस फेज वी have to strengthen our concept. In phase number 1 we are going to strengthen our concept. So ये practice, ये bare minimum, ये daily target सिर्फ और सिर्फ तब होंगे after you have cleared your concept. So 10 दिन हमको बस यही drill चलानी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. On the next phase we have to boost our score. and score boost कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ practice से होगा. Since our concepts are completed now, we have also been practicing our bare minimum daily targets for the past 10 days. तो इन 10 days में हम अब level बढ़ा देंगे, threshold increase कर देंगे. How? We are going to solve 3 RCs timed every single day. Yes,
3 RCs is a lot for one sitting or one day's target, but now we are in the end game, right? So we have to do 3 RCs timed every single day. We can do 30-40 mixed questions, or we can do a sectional test, right? If you are going to solve a sectional test, you will be able to solve the RCs. You will also get a mixed bag type questions that exactly replicates what you are going to get in the exam. And you have to give a mock every 2 days. That makes 3 mocks per week, or at least 2 mocks per week, so that you are in line with the preparation. You can test your preparation, and at the same time you can see for yourself how you perform in panic or under stressful conditions, right? So 3 mocks per week plus analysis. Here at this point, mock analysis should not be left behind, right? So mock does not go without the analysis aspect. In this phase, your focus should be on working your weaknesses and increasing your score, right? So you will be knowing your score just by your mocks and analysis. That's why this step becomes extremely crucial and non-negotiable, right? Finally, your last 10 days phase, where you have to unlock your peak performance. Now you have to give a mock every single day. Last 10 days are left, so obviously the time management, the time crunch, you should be comfortable with all that. So you are supposed to give a mock every single day, and deep analysis, because at this point you are not supposed to be making silly mistakes or some conceptual errors or some errors which were because of the chapters that you skipped. So at this point, deep analysis is extremely important, because you will know where you are lacking and where your strengths lie, right? So strengths, not only your weakness, but also your strengths will be identified during this session, right? During this section, during this phase, your strengths and weaknesses both would be identified. You can ask yourself, what exactly is going wrong? Am I not able to manage the time, or am I having a weak concept, and work on that. So last 10 days should be entirely dedicated to you preparing for the D-Day, right? Finally, a core tip is that do not attempt all 45 questions. I will not say that blindly attempt all 45 questions. If you are confident, of course, please go for it. But our aim is not to attempt more, but to have higher accuracy, right? In order to attempt more, you will lose out on accuracy. So instead of, no, not 30 to 32, but try attempting 35 plus, but with accuracy. Okay, do not compromise on accuracy, and I think if with good accuracy you attempt above 35, I believe that you will get a good score. Ultimately, as I am telling you again and again, accuracy is what matters and not the attempts, right? Finally, these are something that you can do after your bare minimum targets, right? Do not forget that we have fixed our targets for phase 1 and phase 2. If after that you have to spare time, what you can do is you can revise your vocab notebook. Whatever vocab you have been noting down, whatever usage of the words and idioms you have been learning for the past 1 year or so, you can keep on revising on that, keep on looking at it again and again, because ultimately that was the job of that notebook, right? So you have to go through that. Analyze your mistakes. You can note down your mistakes, yes. Whenever you are analyzing your mocks, you can note down your mistakes, and in the last moment, last 2-3 days left, you can just revise those mistakes so that you do not make those mistakes again. So yeah, that was all. That was a 30-day strategy. Please do not read anything random. Please do not read anything new. Just focus on consolidating on what you have studied so far. I hope all of you pass with flying colors. Thank you so much and all the best.